Hey what's up guys, this is Ricky and welcome to my new YouTube video and आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जियो टीवी और IPTV के बारे में. So let's dive right into it. So first of all let's know कि IPTV होता क्या है. So IPTV is nothing else but an internet television. So as the full form says, Internet Protocol Television, it just works on the internet using the Wi-Fi or through an Ethernet cable. It is unlike any other usual or normal television in India. It basically uses just the internet, and the other normal TVs use the dish or the cable connection or the cable wiring. So basically this piece of tech is going to be the future of television in India, and hence काफी सारी companies ये service provide करने की कोशिश कर रही हैं already. So now let's talk about the JioTV. तो ये basically एक IPTV है that works on the internet. एंड मैंने इसके लिए कुछ अप्लाई नहीं किया था या ये बॉक्स सेपरेटली परचेज नहीं किया है. आई जस्ट गॉट दी फाइबर कनेक्शन फ्रॉम जियो इंटरनेट कनेक्शन एंड आफ्टर लाइक यूजिंग फॉर 2 months they called me up and asked whether I would like to try their new Jio TV set-top-box, and I said yes. Also they mentioned that it would be completely free of cost, and hence I tried this. So then after that, in a week, a guy came and just installed this box, and now I'm going to show the contents of this box to you. So basically this had an HDMI cable, power adapter to power this up, and a remote, and obviously the JioTV set-top box itself. And बस यही, उसके अलावा there was no other wiring, nothing else required. He had to set up not really a lot of things, and उसके बाद बस this had to be connected with the TV using this HDMI cable and this power adapter, and then just the internet did the rest of the work. तो अब आपको अगर एक जियो टीवी चाहिए तो उसके लिए आपके पास एक जियो फाइबर कनेक्शन होना जरूरी है, और दैट इज ऑब्वियसली पेड एंड नॉट अ फ्री कनेक्शन. एंड उसके बाद ही आप ये जियो टीवी इंस्टॉल करवा सकते हैं. एंड ऑल्सो इन द बॉक्स इट सेज दैट इज 7300 रुपीज एंड हैज एन IPTV सेट टॉप बॉक्स. सो अभी करंटली ये कम्प्लीटली फ्री है. आई डोंट नो फ्यूचर में इसका प्राइस दे विल सेट इट सेपरेटली या ये फ्री ही रहेगा. सो अब बात करते हैं कि ये जियो टीवी हमें क्या फैसिलिटीज या चैनल्स एग्जैक्टली प्रोवाइड करता है. सो दिस बेसिकली इज एन एंड्रॉइड डिवाइस जो एक पुराने एंड्रॉइड वर्जन पर चल रहा है. सो इसका अपना एक जियो स्टोर है जहां से हम एप्लीकेशंस काफी सारी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि वूट, हॉटस्टार, सोनी लिव, यूट्यूब, Amazon प्राइम एंड काफी सारी. हमें और भी बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलता है, जैसे फिटनेस प्रोग्राम्स हैं, कॉमेडी सेशंस हैं, रेसिपीज के प्रोग्राम्स हैं, योगा के सेशंस हैं, एंड मेनी अदर स्टफ एंड स्मॉल गेम्स फॉर किड्स. सो इन्हीं में से जो मेजर एप्स हैं वही एप्स हमें काफ़ी सारे HD लाइव चैनल्स भी प्रोवाइड करती हैं. हमें ऑलमोस्ट सारे मेजर चैनल्स इसमें ऑलरेडी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सोनी, कलर्स, स्टार प्लस, इंग्लिश मूवी चैनल्स, स्पोर्ट्स चैनल्स एंड कार्टून चैनल्स. एंड अभी भी कुछ चैनल्स हैं जो मिसिंग हैं, बट सिंस दिस जियो टीवी इज इन इनिशियल स्टेज, तो हमें अभी इसमें कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, जैसे कि सबका फेवरेट नेटफ्लिक्स हमें अभी इसमें नहीं देखने को मिलता है. बट अगर हम जियो के ऑफिशियल साइट पे जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन स्टफ एंड दे आर ट्राइंग टू गेट ऑल द एप्स so that we can just enjoy these apps on the TV through JioTV. Initially इसमें Amazon Prime भी नहीं था for like a month, and after that Amazon Prime came, and I hope कि they bring Netflix out soon too. And it also depends on the subscription that you have for your Jio Fiber, because Jio Fiber connection के plan के हिसाब से तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि कौन से subscriptions you can get and for how long, because otherwise if you take a really small plan you won't get all the subscriptions for Hotstar and Voot and Amazon Prime. Otherwise, if you get a higher range plan, then only you can get the subscription for all these channels and plans. So now that I've had this JioTV for like 3-4 months, I'd like to say that my experience has kind of been interesting. I say that because जो इसका user interface है, वो it's all right. It's not that good. It's not that bad. Because ये पुराने Android version पर चलता है, उसकी वजह से काफ़ी basic plain software है इसका. And काफ़ी glitchy भी है at times. We can even download the Jio Home app in our mobile phones and can use our phones as the remote for the TV. And हम उस app के through अपने photos, videos भी cast कर सकते हैं screen पे. Again, that app is not that good. The software is a bit laggy, but it's a good experience and it's a nice thing.
and also we get a USB port in the JioTV box जिसमें हम अपना USB पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं एंड हम सारा वो कंटेंट देख सकते हैं जो हार्ड डिस्क या USB में है. सो दैट्स अ गुड थिंग. And also we can connect Bluetooth headphones directly to the JioTV box, and that had a really good quality and I was really impressed by that. So if you want to watch your TV just by yourself using your headphones, that's a really good thing. And also guys, पहले हम JioTV में काफ़ी थर्ड पार्टी एप्स के APKs डाउनलोड करके उन्हें इंस्टॉल कर सकते थे थ्रू थर्ड पार्टी इंस्टॉलर्स. But now it's not possible because Jio has probably updated this software. And YouTube पे ऐसी काफ़ी वीडियोस हैं जहाँ पे हम Netflix and Amazon पहले इंस्टॉल कर सकते थे. Amazon तो अब आ ही गया है, लेकिन Netflix भी इंस्टॉल कर सकते थे through the APK. But now it's not possible. So I thought you guys would like to know that. So all in all, my experience of JioTV has been pretty good. And I'd like to suggest everyone to have IPTVs as soon as possible because this will be the future of television in India, and I hope that Jio improves their software as soon as possible, and I guess this will boost the experience of JioTV by a lot. So that's been it guys. Let me know in the comment section below whether you'd like to have an IPTV as soon as possible or you just have the normal cable connections, and also let me know in the comment section below what other reviews you'd like to see, what other tech you'd like to see in my videos. So yeah, that's been it, and I hope you guys liked the video. And if you did, do smash that like button and also smash the subscribe button if you haven't already. And see you in the next one.